Welcome, dear students. This is June 2022, paper 1-2. Over to you, question 1. Answer? No one? Charlie. Charlie, yeah, it's repeated. Question 2. Kamil, Durshawar, nothing from you so far. Amir, there. Okay. So, bacho, basically, xylem is adapted differently. Beta. Beta, yeah. Xylem has dash and walls. Open end walls. Yeah, it has no end walls. Durshawar, can you hear me, beta? Yes, sir. So there are no end walls, right? Yeah, Yes. for continuous flow. For continuous flow, yeah. And there's dash inside. Lignin inside. Lignin Thank you, Kamil. for support. For support to prevent collapsing. And it's a narrow lumen for more pressure. Hello? Yes, sir. Narrow lumen for More pressure. more pressure. And there is no cell content. Like nucleus, chloroplast, वगैरह नहीं होता. So there is more space for Water to flow. and minerals. yeah, sap. More space for sap. Water and minerals are called sap. So the answer for this is what? Beta. Yes. So what's bad in Charlie? Kamil? It do not have cytoplasm. Doesn't have cytoplasm. Question 3. Beta. Beta, down the constitutional gradient. From high to low. Probably did this, huh? Yeah, it was alpha. Alpha, good. Yeah, the amount of starch remaining after 30 Beta. minutes. At different temperature, amount of starch. So when you increase the temperature, but when you increase the temperature, starch will go more or less. It will decrease. Yeah. So how could this be beta? Oh, sorry, sir. एक second. Charlie, sir. Charlie. Sir, C. Amylase works on starch. So C is the answer. Very good. Because with the passage of time, amylase breaks down starch and amount of starch decreases. But after this temperature, enzyme is no more active because it got denatured. So amount of starch will increase because it won't be broken down. 6. Sir, delta. Delta. Optimum temperature means temperature at which enzyme works the best. नहीं ना दार देखो ना किया होता ना तो फिर फिट हो जाता काम. So Okay. ये GCSE है या IGCSE? Whatever it is, it's of your benefit. Beta. 7. इसका delta है. Drushar is common syllabus. 7 is delta. सर वो मैंने IGCSE के किए थे ना तो इसलिए. वो that is evening session. 8. And today evening we will discuss IGCSE queries. Yes. Delta. Anyone else? Obviously, delta nitrate helps in making protein. Kamil bhai. This question is repeated. Hello. Bacho, starch will break down by amylase. Maltose is made, maltose will come out. So beta. Burette. Why burette test is blue outside? Because the reducing sugar can't No. Burette is for protein. So is there any protein outside here? No. No. But why inside is burette test positive? Because it contains protein. Because inside is amylase. Amylase enzyme is dash.
is made up of proteins? Obviously, Durashawar, Kamil, ये कल की क्लास है बेटा, वो तो मुझे बताओ कम से कम. So Buret test is positive or negative inside? Positive. Kamil, Positive. what do you observe when there's protein present? From blue to what? Oh my God. ये कल दुरुशवार ने बताया था हमें blue to purple, violet वगैरह. Purple, violet, yeah. 10. Gall bladder remove हो गया है. You know, gall bladder क्या करता है बेटा? It stores dash. Bile, Bile helps in digestion of dash. fats. So the answer is Charlie. If fats are not digested, fatty acid and glycerol won't be made. Done? Yes, sir. बच्चों, Charlie is the answer. Assimilation क्या होता है? आंसर बताओ. Charlie. ये Charlie, repeated yes. है ना? Charlie, well done, Tushar, good. Okay, this is 12 is about 20 degrees Celsius, bright light, 20 in the dark. So 20 degrees Celsius and bright. When there's bright lights, stomata are open or closed? Open. Closed. No, beta, light means stomata open होते हैं to pick up CO2 for photosynthesis. Yeah. So there are two conditions. One plant is put at 20 degrees Celsius and light. The other is put at 20 degrees Celsius but dark. So which one will lose more water? The light one, of course. Light well. Which graph shows the student's result? One was placed this, one was the student set up two identical apparatus. So look, dark one is dashed line, light one is straight line. So which one will lose more water? Hello? Light one, no? So there'll be more fall in mass. What's the answer? Beta, which plant will lose mass more? Which one plant will lose water more? Light one or dark one? दुरुशवार light अमीर one. इधर बेटा आप लोगों की आवाज नहीं Alpha? Alpha होगा शायद. एक्सेलेंट अल्फा. because देखो लाइट वाले ने ज्यादा मास लूज किया और डार्क वाले ने कम. yes, water going up. Repeat it. Charlie. Charlie दुरुशवार दी ग्रेट लीडिंग. ये पेपर हो तो नहीं क्या पहले? Nice, sir. Okay, 14. Which blood vessel to heart transport deoxygenated blood? सर एक तो वीना cava है, दूसरा पता नहीं आर्टरी है, वेन है कुछ. Pulmonary artery. Take blood. Charlie. Pulmonary artery takes the bad blood from right ventricle to lungs. Amir Adar, can you hear us? Yes, sir. Now I can. Earlier, I don't know why I couldn't. Okay, now what's the answer? The diagram shows the human heart. Repeat it. Nose, why will Beta. Beta. When ventricles contract, X close, Y open. Beta. 16. You know, clotting. Plasma? delta? No, sorry, platelets. Yeah, clotting जो होती है ना, blood clotting. उसका प्रोसेस पता है क्या है? फिब्रिनोजन जो है ना, प्लेटलेट्स. बेटा प्लेटलेट्स क्या करते हैं? दे कन्वर्ट fibrinogen protein to fibrin, and then fibrin makes a mesh. Mesh समझते हो ना, यूं Yes, sir. जाली सी, और dash get trapped in the mesh. Blood. Red blood cells. Yes. Yeah. Wow, class. So a dash is made S से.
Seal is made. Seal. Wow. Excellent. Which prevents Germs from entering. Bacteria. Kamal Amir Adar, the great entry of dash and Kamil leakage of dash. Leakage of blood. Blood. Well done, Heather. On the lead. Impressive. Fibrinogen to fibrin. Fibrin makes a mesh. उस मैश में ये आरबीसी आके फंस जाएंगे और एक स्कैब सा बन जाएगा, पता ना स्कैब बन जाता है कहीं, बाद में Yes, वो sir. हम उसे उखाड़ के फेंक देते हैं. So Exactly. RBCs get trapped in the mesh. So a seal is made Yeah. called clot, which prevents entry of जैसे हैदर कह रहे हैं germs and prevents leakage of blood. Blood. So Mr. Shawar is right. Platelet is the answer. अगर platelets नहीं है, हमारे Prime Minister Nawaz Sharif साहब had left the country. You know, when he was scared of army and establishment things and courts and Imran Khan. So he ran to, you know, which Strike country which country did he run to? Sir, I Yeah, don't know. Nawaz Sharif went to London. UK, and for he lived there for about dash years. आपने सुना करो बच्चों 4 साल. It's called self-exile. Self-exile, है ना? Yeah. Like no one pushed him to go there, but he opted that. Then he came back. So the claim he had made was that his platelet count is dropped down, and he could die anytime. Yeah. But now he's super fit. Sir, miracles happen. Yeah. 17. It's the process. I don't know about that. It's maybe aerobic respiration. Beta. Wow. Because CO2 comes out, water comes out, oxygen, glucose are used up. Alpha. Nice. Yes. Aerobic respiration. सही है? 18. दुर्शवारा slow हैं. सर डेल्टा ये कल हुआ Delta. था ना. 18 is delta. कामिल भाई कुछ आप बोले. 19. Sir, beta. Beta, where Yes, dash sir. and dash both increased. Rate and Length depth. and width. Rate Sorry. Length hai. Sorry. Rate and depth. and depth of breathing. Yeah. Rate means what? Number of Rate dash means per count. minute. Yeah. Number of dash per minute. Breathe per minute. Breaths. Number of breaths per minute. Look, he was having like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 breaths and 60 seconds. I mean, Yeah. 11 breaths per minute. And depth का क्या मतलब है? Anyone? Intensity The of breath. amount of air inhaled. नहीं, longer and stronger नहीं. दुर्श्वास से बता रही कि amount of air inhaled. When you have deep breathing ना देखें. Let me give you a demo. देखो, यूं. When you finish up exercise, आप GC कर रहे हैं ना? मैं फिर भूल जाता हूँ. EPOC याद रखना. EPOC. EPOC बड़ी important चीज है बच्चों. Let's find it. What is it? This What is term it? is only in GCE. या GCSE में नहीं है, but theme है. जाग रहे हो? खाना शाना छोड़ दो, मेरी बात सुनो. दुर्शवार जी Sir, सर मैं सुन रही हूँ. कोई बच्चा खाना खा रहा है. Sir, मैं खा रहा हूँ. Oh my God, what are you eating? There's Spaghettis. You can. I woke up 1 minute before your class. Oh, और आप सोचें 1 मिनट में बंदा वॉशरूम जा सकता है? नहीं. It means he started eating without even going to washroom.
I think I should be right now. It's completely roasted, है ना? Air fry. Complete. So what is Yeah. EPOC? Excess post exercise oxygen consumption. या Okay, okay. IGCSE में इसको सिर्फ ऑक्सीजन डेट कहते हैं. Oxygen depth, yes. That be silent. Be with me. When I do exercise, when I do heavy exercise, need for Lactic dash acid increases. जल्दी से बताओ. need for oxygen is Oxygen. needed. Wow, need for energy increases. That means rate of dash increases. Breathing, R से respiration. Respiration. rate of respiration increases, which means oxygen is consumed more or less. More. So in my body, amount of oxygen starts decreasing. Yes. अब जैसे आप पैसे खर्च करना शुरू करें तो कम ही हो जाएंगे ना फिर बहुत ज्यादा खर्च. So when you consume oxygen more, oxygen gets lesser in your body. When oxygen gets lesser in your body, then your body shifts to dash respiration. Anaerobic. Respiration, which produce lactic acid, and that's why we get oxygen. Anaerobic respiration, which oxygen produces lactic acid. Lactic acid accumulates in the dash, in the Muscles. muscle. and muscles get dash. Fatigued. Fatigued, FATIGUED, fatigued. So you are forced to dash the exercise. Stop. Stop the exercise. वाह. आप सेट स्टैंड कर रहे हैं, आप पुशअप कर रहे हैं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें मसल्स इन्वॉल्व. आप सेट स्टैंड कर रहे हैं तो लेग मसल्स में पेन होगा. लिख रहे हैं तो इन मसल्स में पेन होगा. whichever muscle you are putting into work, उसमें एनर्जी चाहिए. रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है, ऑक्सीजन कम होगी, एनर्जी शुरू होगी. लेकिन यू नो व्हाट, बार बार करें एक्सरसाइज ताकि स्टेमिना बढ़े. स्टेमिना बढ़ने का मतलब होता है नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाए. अगर आप डेली फिजिकल वर्क करेंगे तो बॉडी को लगेगा यार इसको ऑक्सीजन रोज ही जरूरत पड़ती है. बॉडी सर मैं करता हूँ लेकिन मेरे फिर भी रेड ब्लड सेल्स कम है. वो डाइट की वजह से. वो बेटा डाइट, क्योंकि एक होता है न्यूट्रिशनल एनीमिया. आप एक्सरसाइज करें आप, लेकिन आप अगर आप वो डाइट में आयरन नहीं है तो फिर भी रेड सेल काउंट कम हो जाता है. ओके. तो बोथ थिंग्स कंट्रीब्यूट. अगर हम जो एक्सरसाइज करेंगे डेली तो ब्रेन विल अडेप्ट टू द न्यू कंडीशन. ये हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है. लाइक अगर आप खाते हैं तो आपका वेट पुट अप नहीं हो रहा ना, तो डोंट थिंक दैट यू विल रिमेन स्मार्ट फॉरएवर. नो. 8-10 साल तक बॉडी रेजिस्ट करती है. देन बॉडी विल अडेप्ट टू न्यू कंडीशन. पहले 8-10 साल तक वो एक्स्ट्रा फूड को निकाल देगी, यार उसको जरूरत नहीं है वैसे खा रहे हैं. फिर क्या होगा, बॉडी विल नॉट थ्रो अवे, वो कहेगी कि ज्यादा जरूरत पड़ गई इसको. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एक दिन तो एनर्बिक शुरू हो जाएगा, दूसरे दिन फिर ऐसा क्या होगा, बॉडी विल मेक मोर आरबीसीज. यार ही इज ऑलवेज इन द नीड ऑफ ऑक्सीजन. आरबीसीज भी ज्यादा होते हैं एथलीट्स के, और उनके आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन भी ज्यादा होती है. हमने पहले ही पढ़ा था. They can they'll have broad chest. Right side of their heart is big. Athletes का right side बड़ा होता है because blood is sent to lungs. बहुत सारी और changes होती हैं उनमें. So basically, so when you stop the exercise because you got fatigued, when you stop the exercise, breathing rate remains high. Yes or no? Yes, sir. And heartbeat rate remains high. Why heartbeat rate remains high? To carry lactic acid from muscles to. Why heart rate remains high? To carry Liver. To get liver. oxygenated. Sorry. Liver. Well done, Drishwar. And breathing rate remains high, Kamil. Why? For dash respiration of dash and the dash. For more oxygen for aerobic respiration. A से for dash. आपकी आवाज नहीं आ रही, इंटरनेट इशू है. aerobic respiration of. ये बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. अमीर अदर आप इसको बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जिन बच्चों को कनेक्शन का मसला. For aerobic respiration of lactic acid in the liver. तो आप एक्सरसाइज स्टॉप करो, फिर भी ब्रीथिंग रेट एंड डेप्थ विल रिमेन हाई. ये कह रहे हैं बेटा, समझो कामिल, देखो क्या लिखा हुआ है. आउटलाइन हाउ ऑक्सीजन डेथ इज रिमूव्ड. व्हाट इज ऑक्सीजन डेथ? अमाउंट ऑफ डैश नीडेड फॉर डैश रेस्पिरेशन ऑफ डैश इन द डैश. दुरुशवार बोले. एनीवन?
What is oxygen debt? Amount of, सर आवाज नहीं आ रही थी आपकी, दोबारा बोला. चलें, oxygen debt is amount of dash needed for the dash respiration of dash and the dash. Oxygen debt is Amount of oxygen needed for the aerobic respiration of lactic acid in ah the liver. This is oxygen debt. liver. Yeah. So how oxygen debt is removed? By continuation, even after the exercise, of high heart rate and breathing rate. Heart rate क्यों high रहता है? So that it should be taken to liver. And breathing rate and depth remains high, so that more and more oxygen is supplied for aerobic respiration of lactic acid in the muscle. Done? इसको कहते हैं EPOC या oxygen debt. भूलना नहीं है बेटा. Okay. Answer अरे to हमने 19. पहले 19 is beta. बीटा 20. Out of course. 21. Can you name 1, 2, 3, 4? one is the vein. No, vein one is superficial arterioles. हाँ आप one is superficial arteriole. बात सुनो बच्चों, गर्मियों में समर में सुपरफिशियल आर्टरियोल्स क्या करती हैं? डू दे कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट? गर्मियों में they constrict. They dilate so that more blood can enter and Yeah, lose they heat. dilate so more blood goes under the skin. More heat could be lost. Yes. और बच्चों ये 2 क्या है? Dash ending. nerve ending. Nerve. Nerve ending. And 3 जो है ना dash gland. Sweat gland. Sweat gland. 4 कामिल में बता रहे हैं adipose tissue Fresh. अच्छा अच्छा. या fat tissue. भूलना नहीं है. Receptor में 4 is adipose tissue. Remember. सर ये pressure receptor नहीं है 4. नहीं वो ये है, देखें ये 4 is, look, 4 is pointing out to these dotted things. Yeah okay. This is Sir, hair. what is the job of 2 and that 4 के ऊपर जो है? 4 के ऊपर नहीं, 4 तो ये 4 के ऊपर प्रेशर रिसेप्टर है ना. इट विल मतलब प्रेशर सेंसिटिविटी. When our What skin is the is, job of nerve endings? they sense the stimulus. अगर स्किन के ऊपर कुछ गड़बड़ हो तो ब्रेन को बताते हैं. सही है. अगर नर्व एंडिंग नहीं yes, होगी तो इफ समथिंग वॉक्स ऑन द स्किन हमें पता नहीं चलेगा. जो शायद समझ रही है. Yes, sir. और पता है ये थोड़ा सा नीचे क्यों है प्रेशर रिसेप्टर ये वो, सो दैट वी आर नॉट ओवर सेंसिटिव. वरना तो कपड़े भी स्किन को लगेंगे तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है. हर we would have been in every time in a state of irritation as if something is walking. अब देखो ये कपड़े मैंने पहने हुए हैं, ये मुझे ब्रेन को नहीं इन्फॉर्मेशन देता, ये टच होते हैं इशू नहीं होता. लेकिन इनकी इससे कम फोर्स से कोई स्किन के ऊपर कोई इंसेक्ट वगैरह ट्रैवल करेगा हमें पता चल जाए. Why is it Yes. so? This is something for further inquiry. When you grow up and go into sciences, biosciences, you can have a research on that. It's a subject matter of psychology as well. अब देखें एक बंदा है, वो बच्चा कहता है, येल करता है उसमें, इधर आओ, उसको प्रोवाइड नहीं होती. और एक बंदा कहता है बेटा बात सुने, बच्चा कॉशियस हो जाता है. इसको कहते हैं लाइक हैबिचुएशन. अगर आप कैट को यूं करें ना, यूं भाग जाएगी, बट 2-3 दफा करें ना मारे फिर नहीं भागेगी. Yes. इसको कहते हैं हैबिचुएशन. वो इनफेक्टिव हो जाती है चीज. Repeated overuse of brakes will fail the brake. Yes or no? Yes. आप हाइट पे नीचे गाड़ी लेके आए ना तो लिखा होता है जगह जगह पर अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ ब्रेक्स. तो कपड़े मेरे स्किन पे हर वक्त होते हैं. That's why skin is habituated to that. हालांकि उससे कम प्रेशर से एक इंसेक्ट अगर ट्रैवल करता है फौरन पता चलता है. कोई बंदा सो रहा होगा तो उसको जगाने का बेस्ट तरीका क्या है? थोड़े शवार से पूछते हैं. सर उसके ऊपर पानी गिरा दो नो नो या उसके वो जो मैं बिस्तर हटा दो, ब्लैंकेट हटा दो, जो मैं अडॉप्ट करता हूँ बहुत डैशिंग वे. नाक के अंदर कपड़ा घुसाना.
पतला सा कपड़ा नाक में। लेकिन खुद बच सर जाएगा, अगर आप सामने होंगे ये तो जो उसके हाथ में होगा उठा के आपको मार देगा। ये सर और व्हाट भी बड़े तरीके इंटरेस्टिंग। हैं, कभी बॉयज की क्लास हुई तो आपको बताऊंगा। एनीवे, what's the answer? 21. बीटा। Oops, beta. Which are involved in maintaining body temperature? 1, 2, 3, 4. Oh my God. 1 is involved, यस सर। superficial arteriole. 2 is involved, क्योंकि 2 nerve ending है। Nerve ending क्या करेगी? सुनो, nerve ending जो है ना, टेम्परेचर को सेंस करेगी। हेलो, सर जरूरत क्या है? बहुत, सॉरी। मैं बताता हूँ, बहुत जरूरी है, मैं बताता हूँ हैदर भाई। नर्व एंडिंग्स विल डिटेक्ट द टेम्परेचर कि बाहर यार गर्मी है, स्किन को टेम्परेचर फील हुआ, एक्सक्यूज मी, इट विल ऑर्डर द ब्रेन, मैसेज विल बी सेंड टू ब्रेन, ब्रेन से फिर ऑर्डर आएगा सुपरफिशियल आर्टरियोज को कि वो डायलेट करें। डायलेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरफिशियल आर्टरियोज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ओके। ब्रेन सेंड्स ऑर्डर। ऑल्सो आप देखो हेयर इरेक्टर मसल, अगर नर्व एंडिंग बताती है कि टेम्परेचर कम हो गया है, तो हेयर इरेक्टर मसल, ये वाला जो है मैं लेबल कर रहा हूँ, हेयर इरेक्टर मसल विल दिस कॉन्ट्रैक्ट या यस रिलैक्स? इट विल कॉन। बाहर क्या हो गया सर? टेम्परेचर इज लेस। गोइंग टू रिलैक्स। No, hair erector muscle will contract, hair will Contract, air will get straightened, and invisible coat of hot air will be वाह will वाह surround. वाह वाह वाह, इनविजिबल लेयर ऑफ वार्म एयर। जब बाल खड़े हो गए देखें ये, तो इनमें जो है ना, अब नजर ही नहीं आ रहा, इनमें इनविजिबल एयर ट्रैप होगी, एयर हमारी स्किन को टच करके वार्म होगी, तो आपके पास इनविजिबल ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। लवली, गुड। सो 1 2 3 4, 21 इज बीटा। Yep. 22 बहुत इजी है। पीरियड 1 में टेम्परेचर बढ़ रहा है, पीरियड 2 में कम हो रहा है। व्हाट्स द आंसर? वी डिड दिस यस्टरडे। सर पीरियड पहले 1 में एक्सरसाइज हो रही है, उधर पीरियड 2 में डेल्टा बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। सो चार्ली, डेल्टा सी। चार्ली, कैसे इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज स्वेटिंग इज अ कूलिंग प्रोसेस ना, जब हम स्वेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर कम होता है, हीट बाहर निकलती यू आर राइट। है। यस अमीर, अगर अगर आपका सावन का जो महीना होता है, सावन, यस। बारिशों का महीना, सावन में तो पोएट्स पोएट्री करते हैं, दिसंबर में भी करते हैं, समझ है ना? दिसंबर किस तरह, दिसंबर का महीना था सुहानी शाम मंगल की, आगे थोड़ा सा फजूल है, तो मेरा ख्याल है बड़ा मशहूर गाना है ना, दिसंबर का महीना था सुहानी शाम मंगल की, कोई लड़की नहीं, इस तरह। तो दिसंबर पे भी पोइट्री होती है, बहार पे भी पोइट्री होती है, खजां पे भी होती है, खजा रसीदा, ये अंडरस्टैंड है ना? ये मेरी अपनी पोइट्री थी। तेरे जुनून से बहारें उधार लेती हैं, आई डेडिकेटेड दिस टू बुरहान माय सन। जुनून मतलब पैशन, तेरे जुनून से बहारें उधार लेती हैं, नहीं समझ आ रही? खजा रसीदा फजाओं का एतबार न कर, यानी आपको अल्लाह ने इतना जज्बा दिया हुआ है कि बहारें जो है ना, आप, बाहर एक जोशीला मौसम है, पैशन, एनर्जी, करंट, यस और नो? विंटर इज नॉट दैट करंटफुल एनर्जी। कोर्स इट इज नॉट। विंटर में आप फ्रीज होते हैं, तो वो यानी जो होता है ना, आई कैंट डू दिस, इस तरह की फीलिंग किसी काम में वो कर रहा था, मैं नहीं कर सकता, तो मैंने उसे एक पोएम लिखी थी, उसमें डेडिकेट किया था, पता नहीं वो है नहीं, तो वो ये था कि तेरे जुनून से बहारें उधार लेती हैं, यानी आपके अंदर खुदा ने इतनी एनर्जी रखी है, जोश है कि बहारें बोरो करती हैं आपसे जोश। मिसाल है, खजान रसीदा फजाओं का एतबार ना कर, यानी तुम ऐसी आवाज़ों का ध्यान ना दो कि जो ये फील कराती हैं आपको, या जो कोई आपके अंदर से भी, बस को तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है कि आई कांट डू दिस, आई एम नॉट केपेबल, यानी उनका एतबार ना करो। तो ये सब बच्चों को डेडिकेटेड है। वैसे थोड़ा बात थोड़ी गहरी होगी है, समझ आई वैसे, हैं? उर्दू है ना? अमीर सर सर हैदर, वाह एक एक सर एक वाह बार वाह दोबारा वाह। सुनाना। सर मजे की है। जी दुरुशवार बेटा, एक दो बार फिर।
तेरे जनू से बहारें उधार लेती हैं, खजां रसीदा फजाओं वाह के सर। एतबार न कर। Wow, that is actually really good. या या पूरी पोएम दैट मिली वाज तो सुनाऊंगा। सो द ओके सर। आइडिया इज कि आपने जो है ना विगरस एक्सरसाइज होगी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। हाँ, तो सावन के महीने के बारे में पोएट्री नहीं है। ह्यूमिडिटी नमी, दे कॉल इट सर हब। है सर नहीं, एक है बहुत फेमस है, एक उधर ही कुछ सावन बरसात समथिंग। वो बरसात, हाँ हाँ, यस यस। लेकिन आप तो बरसात, सावन में भी बरसात को पोएट लाइक करते हैं। अगर बरसात भी नहीं होती, ह्यूमिडिटी है बाहर, तो शायद देखें सावन के महीने में बरसात इज ब्लेसिंग, रैन। लेकिन अगर बारिश भी नहीं होती, सावन इज सफोकेशन, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी। कैन यू रिकॉल ऑफ दैट मंथ? ये अभी कुछ महीने पहले गुजरा है। हब्स होती सर है, डेट। हब्स होती है, देयर इज ऑल मॉइस्चर आउटसाइड, बिस्तर गीले हो गए। अजीब सा। हाँ, और ह्यूमिड। बहुत गंदा मौसम होता है, क्योंकि आप अंदर से स्वेट आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि बाहर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है। तो हीट अंदर यस। की अंदर ही रहती है, हीट रहती है अंदर, तो हम कहते हैं वी फील सफोकेटेड। अगर आप लोगों को भी, फॉर एग्जाम्पल आप, मैं और आप बातें कर रहे हैं ना, एंड यू वांट टू से समथिंग, मैं एक दफा आपकी बात नहीं सुनता, दो दफा नहीं सुनता, कॉन्टिन्यूसली अगर मैं बैन कर दूं, या मैं सिर्फ एक क्लास में ना सुना, इसको भी सफोकेशन कहते हैं। और टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में कहते हैं कि अच्छी क्लास हो जिसमें 60-40 की रेशो हो, कि 60% टीचर बोले, 40% बच्चे बोले। ट्रस्ट मी, इट शुड बी अ डायलॉग, नॉट मोनोलॉग। अगर आप में से कोई फ्यूचर में टीचिंग में आना चाहे तो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टीचिंग इज अ डायलॉग, कि आप टीचिंग में ऑडियंस को भी इंगेज करें। आमतौर पे पेरेंट्स क्यों नहीं बच्चों को ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाते? क्योंकि वो सिर्फ सुनाते हैं, मोनोलॉग। और टीचर मोनोलॉग होता है, वो सिर्फ सुनाते हैं। टीचर क्या करते हैं? बिकॉज पेरेंट्स के पास अथॉरिटी होती है ना, कि वी आर देयर पेरेंट्स, वी वो इन्वेस्ट सर इन। सुनाते हैं और टीचर सुन के सुनाते हैं बस। टीचर का ऐसा ये कुछ। होता है, टीचर, देखिए टीचर को पता है कि मेरे पास वेपन कोई भी नहीं है, मतलब पेरेंट्स के पास दे हैव अ रीजन टू डिक्टेट, नॉट टू लिसन। एक तो बच्चा मेंटली, साइकोलॉजिकली, रिलीजियसली वो प्रिपेयर्ड होता है ओबे करने के लिए, नॉट टू डिसएग्री, नॉट टू डिसोबे। फिर वो ओब्लाइज भी होता है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, निगरानी होती है, बहुत कुछ होता है, मोहब्बत होती है, रेजिंग होती है। टीचर के पास द ओनली टूल टू मेक इन्फ्लुएंस इन द चाइल्ड्स लाइफ इज द आर्ग्यूमेंट, पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो फिर, लेकिन इससे आपको ये पता चल सकता है एक लिहाज से कि कुछ भी ना हो और आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो तो आप ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। खैर बहरहाल मेरे ख्याल हम काफी अवे चले गए टॉपिक से, एक चलो ये भी लाइफ है, क्या ख्याल है? ओके 22 इज, तो अगर इसका मतलब आप स्वेट करोगे तो आपकी बॉडी हीट निकलेगी एंड यू वॉन्ट फील सफोकेटेड। चार्ली 23 जी, अब दुरुशवार अंदर अंदर से सोच रही है कि टाइम वेस्ट करें, और ये जो है ना जख्मी दिल पार्ट 2 हमें भेज के इन्होंने कर दिया, ये कोर्स से निकल गया 23। और 24 इज रिपीटेड क्वेश्चन। 24 बेटा जल्दी से बताओ। 24 सर है जी अल्फा। दुरुशवार किधर चली गई है? 25। हेलो दुरुशवार। Yes sir, can you hear me? यस 25। यार ब्लड ग्लूकोज कौन बढ़ाएगा खुदा के लिए, कामिल भाई प्लीज। सर पेंक्रियास ग्लाइकोजन। 25 का आंसर प्लीज Sir, गेस। delta. डेल्टा, डेल्टा। यार मेरी बात सुनो, ये तो अ कंडीशन कॉजिंग सफरर्स टू रिड्यूस फूड इनटेक, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, सर जेनेटिक। डेल्टा तो ठीक है, एड्रेनलिन तो करता है, लेकिन ग्लाइकोजन तो मतलब उसका जो बेसिक काम है करना, एड्रेनलिन तो फाइट और फ्लाइट स्टोर्स सूरज में आता है। बट देयर इज नो ग्लाइकोजन ऑप्शन। वही तो वही तो ढूंढ रहा रोस्टेड, था मैं रोस्टेड ऑप्शन। अगेन। सर 26 is out of course। 27 excessive consumption of alcohol। सर लिवर डैमेज हो जाता है। वो कह रहा है एक शॉर्ट टर्म, वो 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 लॉन्ग टर्म ऑप्शन ही इफेक्ट नहीं है, है वो है वैसे। कि अल्कोहल यूज करते हैं लोग एंड दे कीप यूजिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे स्मोकिंग है, ओबिसिटी है, फैट इंटेक है, अल्कोहल है, दीज थिंग्स उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में आता है लिवर डैमेज। लेकिन वो देर से इफेक्ट होता है पर रिवर्स भी नहीं होता, लिवर गया तो गया। सो द सर आंसर ये इज चार्ली। सी या डी में से कुछ है। सी या डी, वेरी गुड। दुरशार बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें अल्कोहल जो है ना, ठहरो मैं इसको, इसके लिए ना मुझे ये ऑफ करना पड़ेगा शेयरिंग। देखें एक बात,
अल्कोहल इज अ डिप्रेसेंट ड्रग. डिप्रेशन मतलब इट डल्स द सेंसेस. ये डिप्रेशन वो नहीं है कि जो आपको डिप्रेस करता है, वो वाला डिप्रेशन नहीं, लेकिन ये इट डल्स द सेंसेस. जैसे कॉफी क्या है, कॉफी डिप्रेसेंट है या स्टिमुलेंट है? या तो अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो डिप्रेसेंट हैं, दे डल दी सेंसेस. तो जल्दी से मुझे बताएं कि डल सेंसेस का मतलब क्या? रिएक्शन टाइम गेट्स स्लो या लेस या मोर? स्लो. लेस जाहिर है. रिएक्शन टाइम गेट्स मोर. मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, आप देर से रिएक्ट करते हैं. अब गाड़ी चला रहा हूं मैं, तो ब्रेक, अगर एक बंदा गॉड फॉरबिड अल्कोहलिक, ही विल अप्लाई ब्रेक अ लिटिल लेट, क्योंकि उसके सेंसेस स्लो हो गए, तो हादसे हो जाएंगे, मर जाएंगे लोग. That's why it's called drug of abuse. That drug is called abusive drug, जिसका सोसाइटी पे भी असर हो. Why is smoking called drug of abuse by some people? Because वो उसके धुएं से दूसरों की आईज इरिटेट होती हैं. सुन रहे हैं मेरी बात? हेरोइन ड्रग ऑफ अब्यूज है. क्यों? अल्कोहल ड्रग ऑफ अब्यूज है, क्योंकि जब ये नहीं मिलती तो बंदा स्टार्व करता है उनके लिए. सो इसको साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं severe withdrawal symptoms. कि when the drugs are not available, person shows severe symptoms. नाजिया, उल्टी हो जाती है, फीलिंग आती है उल्टी की, नाजिया. वो क्राइम करने लग जाते हैं, थेफ्ट भी करते हैं. एट टाइम्स दे विल डू चोरी फ्रॉम देयर होम, उठा के किसी बेचना शुरू कर देते. दे डोंट केयर, उनको इज्जत नहीं रहती किसी. तो इसकी सोशल इम्प्लीकेशन है. तो इसका आंसर क्या है? चार्ली. ठीक है.